एक चीज बताना, just making your friend understand how is this whole industry जो टीवी इंडस्ट्री है, how is this? ये PR पे काफी काम करते हैं लोग इनके. हाँ यार, आई मीन बॉम्बे पीआर तो काफ़ी एक्टिव है एंड पीपल एंजॉय दिस paparazzi and these are all fake, right? ऑल पेड. सबका रेट है यार, ऑल पेड. एंड रेट्स ऐसे तुम कहोगे यार इससे अच्छा तो खुद का ही कंटेंट बना के और खुद अपने आप को प्रमोट कर लो. They're so expensive. But then people who can afford are affording, no? And they're also benefiting out of it. And maybe it's a requirement of their job as well. But it's crazy number, Nick. I mean, rate, सच्ची में रेट कार्ड है, दे दूंगी मैं तुझे अगर तुझे दिखाने लोगों को. This is people what they are paying for every post that, for every one post or reel that goes on Instagram or YouTube. And it's a very vicious circle, I believe. And I realized, though सब बोलते हैं नहीं, it's part of your profession, you have to do it. Yes, you need to do it, but at the right time. But you don't have to do it spending from your own pocket when you're not even having that kind of an income. अब तू कमा रहा 1 लाख रुपये महीना, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख. अब उसमें से तू 1.5-2 अगर PR पे दे देगा अपने, is it really helping you in a world right now wherein everybody is doing PR and everybody is at their own PR? Is it worth it is what I'm asking. See, for me, I realized, this is another reason I wanted to settle in a tier 2, that itna jhanjat nahi hai. You're respected for your work. What I love the most about acting is the process of filmmaking. If you ask me, do I enjoy going for events and these airport looks and paparazzi? It was my no. You do not. No. But I enjoy stepping into a character if I'm challenged to be somebody else and emote and share that emotion through my skills with my audience. That is something that I fell in love with, and that's the only thing which has helped me sustain in this profession, in spite of having a long gap in between. मेरा ना यही क्वेश्चन था, मैंने इसको डिफरेंट वर्ड्स में था, बट इसको ना बहुत सरल भाषा में अगर पूछे, दिल्ली की भाषा में अगर पूछा जाए, क्या फेम सिर पे चढ़ा है अभी तक? नहीं, मैं चढ़ने दूंगी भी नहीं. मैं वो that is a follow up question. How do you control this? Because if fame gets to your head and you're not getting the same amount of result back, वो chaotic हो जाता है. Life doesn't become clearer, it becomes more chaotic, right? So how are you keeping sane? क्या ऐसे बोलो ना, मैं नहीं चढ़ने दूंगी, मतलब what are you doing कि मैं नहीं चढ़ने दे रही? यार एक तो अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं. सच बताओ तो कि मतलब ऐसा चढ़ जाए दिमाग पे, नहीं हुआ ऐसा. लाइफ हैज़ बीन क्वाइट बैलेंस्ड फॉर मी, थैंक्स टू गॉड. कि मतलब गॉड कहता है अच्छा, दिस मामांगम हैपेंड, इट वाज ह्यूज फॉर मी. आई मीन आई वाज लिटरली पुट अप ऑन द पेडेस्ट्रियल. आफ्टर दैट लॉकडाउन हैपेंड, आफ्टर दैट फकिंग लाइफ हैपेंड, एंड देन यू आर लाइक नो वर्क अगेन. अब क्या करना है लाइफ में? अच्छा, सो अब लाइफ नए सिरे से शुरू करनी है, बिकॉज देयर सो मच दैट हैज़ हैपेंड टू यू इन दैट ऑफ टाइम, ऑफ कैमरा एंड ऑफ योर वर्क, दैट यू वांट टू रीस्टार्ट. अब रीस्टार्ट करना है तो तब तक तुम इतने बदल चुके हो एज अ ह्यूमन दैट यू सी लाइफ इन अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट टैंजेंट, एंड लाइक तुम्हें पीस चाहिए लाइफ में. यू एन्जॉय योर वर्क, येस. यू वांट टू डू दिस, येस. बिकॉज या मैं कोई फ़ोटोशूट करती हूँ या कोई कैमरा रोल होता है ना, I think I'll fall in love with the camera. Like, I have not got men in my life I can fall in love with so intensely because I've not got that emotion back. But camera somewhere gives that to me. I'm like, at least this shows my true emotion out to the world, how I look into it, how the camera sees me. I think that relationship of me with this tripod is amazing. That's nice way to put it, but I feel sorry for the men who didn't try on you. No, it's not about trying. It's about holding up.